So electrolysis is the decomposition of an electrolyte by passing or using electricity or current. Okay, that is what is electrolysis. Name a substance that could be used as the inert electrodes. Any idea? Inert electrodes. Give me two substances. Platinum and carbon. Okay, so it's carbon, which which is basically graphite, not the other carbon, which is diamond. And the other one is platinum. Okay, that can also be used, but platinum is more expensive. I said so. I'm also going to discuss the electrolysis of NaCl. I mean, let's talk about this. He's trying to electrolyze aqueous NaCl. So what's going to happen with aqueous NaCl is, let's do it over here. Just one second. So we can try and do this over here. Aqueous NaCl. So you're going to have two electrodes, and so these are your two electrodes, and they will be connected by a battery. And aqueous NaCl would have Na plus one ions, and it would have Cl minus one ions, and over here it's going to be H plus one, and over here it's going to be OH minus one. Okay, so it's aqueous. Battery is sending electrons over here. Someone out of the two is going to gain electrons. So the electrons would either be going to Na plus one, or they would be going to H plus one. How do you decide who gains electrons? It's the reactivity series K, Na, Ca, and H is somewhere right at the bottom. There is Cu, Hg, etc. So how do you select? How do you choose? N is over here, H is over here. You always select the one that's least reactive. That's the one that's going to gain electrons. So over here, H is the one that's going to gain electrons, and H is diatomic, so it's going to be 2H plus 1. Okay, this is the cathode. At cathode, it's always a gain of electrons. Okay, the smaller terminal is the one that's giving electrons. So they always gain electrons. Reduction happens. I said H is diatomic, so there should be 2H plus 1. They would gain two electrons to form a hydrogen gas, or two hydrogen atoms, and they would combine to form H2. It's a diatomic molecule. अब दूसरी साइड पे क्या होगा? दूसरी साइड पे you have OH minus 1 and you have Cl minus 1. So who's going to give the electrons to the battery? It's either Cl minus 1 or it's OH minus 1. तो यहाँ पे जो series थी, it was I minus 1, then Br minus 1, then you had OH minus 1, and then Cl minus 1, and then the rest of the negative ions, right? Uh, Sulfate, nitrate, carbonate, etc. I said now either be lower. It's the competition is between Cl minus 1 and OH minus 1. So you should have selected OH minus 1. That's the one that's going to lose electrons. But uh, they had used the word concentrated NaCl. And we had discussed when we were studying electrolysis that if you use the word concentrated, uh, then something happens to Cl, and Cl is the one that's always going to lose electrons. So you're going to select. Okay, remember, if the word concentrated is used, you have to select Cl minus one. It is the one that always loses electrons, and it's also diatomic. So it's 2Cl minus one. They're going to lose electrons to form Cl2, and your two electrons are going to be lost. So this is the reaction that's happening. Okay, remember in both cases, choose the bottom one. But if Cl minus 1 is concentrated, you always select Cl minus 1. Okay, ये clear है? Anna, is this clear? Uh, Sir, can we write it the other way, like हाँ 2Cl minus 2 electrons? हाँ वही मतलब वो मैथ की इक्वेशन की तरह ही है ना.
बस वो होता है कि केमिस्ट्री के अंदर ना मतलब कोई गलती नहीं है इसमें, -2 इलेक्ट्रॉन्स दैट्स परफेक्टली फाइन। बस वो है कि पास पेपर्स के अंदर ना इट्स ये -2 इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरी साइड पे लिखे होते हैं, ठीक है? तो मीन्स द सेम थिंग, मार्क्स इस पे नहीं कटेंगे। चलो ये हमने पूरा कर लिया उसका इलेक्ट्रोलिसिस जो वो कह रहा था। अब हम बारी बारी उसका आंसर, राइट आयोनिक हाफ इक्विवेलेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो तो हमने भी कर ली थी। इट्स 2H+1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट फॉर्म्स H2, ठीक है? अगली क्या है? गिव द फॉर्मूला ऑफ द 4 आयंस प्रेजेंट इन, वो 4 आयंस भी हमने लिख लिए थे। इट वाज Na+1 and then Cl-1, then H+1, then OH was -1। फिर वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड आया है कि व्हाट हैपेंड वाज कि इस साइड पे Na+1 चला, सॉरी H+1 चला गया क्योंकि इट चेंज इनटू हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे नजर क्या आएगा? बबल्स नजर आएंगे और एफर्वेसेंस किस चीज के? हाइड्रोजन गैस के बबल्स। इधर क्या नजर आएगा? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इज अ ग्रीनिश, खैर ऑब्जर्वेशन तो पूछ भी नहीं रहा था वो। रिमेंबर क्लोरीन गैस इज अ ग्रीनिश येलो गैस। तो Cl-1 भी चला गया, तो पीछे क्या रह गया? Na and OH। So that is how NaOH is produced। कि पीछे H+1 और Cl-1 both are gone, they've changed into gases, so you're left with NaOH। तो explain how। तो आप लिखोगे कि H+1 मतलब यहाँ पे and Cl-1 they get discharged or they change into gases and escape। अच्छा, change into gases and escape, and Na+1 and OH ions are left in the solution, ठीक है? Is this clear? Is it clear? इरम clear है? Yes, sir. ठीक है, तो that is done। नेक्स्ट इज, वो कह रहे किसी को याद है ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? कि इट्स एन alkane reacting with chlorine। What was it called? कि there was this reaction if you have any alkane, ठीक है? alkanes का एक ही रिएक्शन होता था कि if you have any alkane तो आप उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते थे यूवी लाइट के अंदर, ठीक है? लेट्स रिवाइज दैट। तो what would happen? Substitution would happen। Substitution would be कि one of the H would get knocked out and it would get substituted by chlorine, and the H that gets knocked out would react with the other chlorine because there are two chlorines, and they would end up forming HCl। So this was called your substitution reaction, ठीक है? Because the H would get substituted and the reaction would not end over there। The reaction would just keep on going until all the hydrogens eventually get substituted by Cl, or you run out of Cl in the first place। So what conditions needed for this reaction? UV light, ठीक है? Anna, Sidra, is this clear? याद है? Yes. Yes. अच्छा, next one is draw two structural isomers of C3H7Cl। तो C3 1 Cl है and there are 7 H's। तो 1 2, each carbon should be making 4 bonds। तो ये आपके 7H हो गए। What could be the other isomer? The other isomer is Cl is right at the end right now, so put it in the middle, ठीक है? Isomer क्या होता था? Isomer होता था कि you had the same number of atoms but arranged differently, having different structural formulas, ठीक है? So you had
अच्छा ये आपका मॉलिक्यूल हो गया उसका. So these are your two isomers. इससे ज़्यादा isomers नहीं बन सकते क्योंकि Cl को अगर यहाँ पे उठाओगे ना it would mean the same thing. इसी मॉलिक्यूल को उल्टा करके रख दो that you get the same thing. तो Cl can only be either at the end or it could be in the middle. अच्छा Cl को ऊपर की बजाय नीचे की तरफ ड्रॉ कर दो वो भी सेम चीज़ है. इसी मॉलिक्यूल को उल्टा करके फ्लिप करके रख दो it's the same thing. ठीक है. So the only possible two isomers are these two. साथ clear है ये? Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट वन इज कि वो कह रहे हैं कि प्रोपीन विद क्लोरीन इज एन एडिशन रिएक्शन. प्रोपीन alkenes के एडिशन रिएक्शंस होते थे unlike alkanes. If you have an alkene like this one, तो इसका अगर रिएक्शन Cl2 के साथ होता था what would happen is कि the double bond would break and Cl's would get added because the carbon, so it was an addition reaction. So why is it an addition reaction? Because molecules get added up. No other byproduct. ठीक है साथ कुछ भी नहीं बन रहा. So there's no byproduct that's formed next to it. As the next one is structures of the reactants and products of this reaction are shown. So well, we've actually done the reaction. Double bond khatam ho gaya and Cl has gotten added up. Now you're supposed to अच्छा वो कह रहे कि energy calculate करो to break the bonds. ठीक है calculate the energy needed to break the bonds. तो remember कि you're supposed to break the bonds in the reactants. ठीक है every time when you have this reaction, whenever you have any reaction, तो आपने ना सबसे पहले you have to break the bonds, the old bonds. ठीक है take out your calculators, try and calculate. पहले तो देखो कि bonds कितने तोड़ने हैं. Let's count के C और H के कितने bonds तोड़ने हैं. You have to be very careful. This is one CH, another CH, another CH. So it's 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So you have to break 6 C and H bonds. फिर और कौन से bonds तोड़े? There's a C and C bond that has to be that needs to go, but there's only one of them. Here you have to break the C and C, the double bond between them. That needs to be broken. Of a Cl or Cl ka bond that also needs to be. So these are all the bonds that need to be broken. So calculate the energy needed to break the bonds. Okay, you have to break all the bonds and then you have to form these new bonds. So everyone try and calculate this and tell me what the answer is. And you have to be very careful. The bond energies are given over here. CH kitna hai? 413 into 6. CC 347. वो एक ही दफा. C double bond C, that's 612. One time. ClCl is 242. That's also one bond. Anyone साथ calculator पे solve कर जरा क्या आ रहा है आंसर. Sidra, have you done this? Is it? Anna? Someone else, 3679, right? Someone also recheck, okay, if you have so many calculations to do, lots of silly mistakes can be done. Achha, next is okay, find the energy that's, and this is plus, it's endothermic. Okay, remember breaking bonds that requires energy. The next one is how much energy is released when bonds are formed. So which bonds are formed? These bonds are formed. So start calculating this. How many bonds? How many C and H bonds? That's 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So you want to form 6 CH bonds.
How many C and C? That's 1 and 2. So that's 2 bonds between C and C. And then you have CCl and CCl bonds. That's 2 of them. So did I miss anything? I don't think so. So try and find out what energy would be released. The energy values are given over here. Okay, that's so it's 3, 8, 5, 0. और ये minus होगा. ठीक है, remember when bonds are formed, energy is released. Exothermic is minus. So वो कह रहा है calculate the energy change for the reaction between propene and chlorine. वो इन दोनों का sum होगा. So it's going to be इतनी energy चाहिए थी 3679 to break the bonds, and this is the amount of energy that is released when new bonds are formed. So what's the तो ये क्या आ रहा है? इन दोनों को plus or minus करो तो what do you get? 171. But minus 171, right? Yeah. So that means more energy is actually released and less energy is absorbed. So overall, it's exothermic. ठीक है? Is this clear to everyone? Is it clear? बाकियों को clear है? Anna, is this clear? Yes. अच्छा, अगला question. There are 3 functional groups in compound A. Name the homologous series. ये किस में होता है? किस homologous series में होता है ये? Double bond. What do you call them? Alkene. ठीक है, this one is alkene. ये अगला वाला किस में होता है? Alcohol. ठीक है, so this one is in alcohol and the next one is A. Okay, carboxylic acid. ठीक है. So he's saying there's this molecule, उसके अंदर all 3 are present. But you have a carboxylic acid, COH, you have an alcohol, and you have a double bond. So there's one molecule which has all 3. What would you observe when compound A is added to bromine? तो bromine के साथ doesn't even know bromine किस चीज का टेस्ट होता था? Well, if I react this with bromine, what should I get? ब्रोमीन alkenes का टेस्ट होता था, एडिशन रिएक्शन होता था alkenes का. तो मतलब ये COH ऊपर ही रहने दो, ये CH2OH भी ऊपर रहने दो. There's H and H. तो डबल बॉन्ड टूटता था and the bromines will get added up to the carbon atoms. ठीक है. तो red brown bromine would get decolorized. तो उसने क्या observe? तो red brown bromine और orange bromine gets decolorized. ठीक है. और फिर अगला है कि कार्बोनेट के साथ कौन सा रिएक्ट करेगा? कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्ट करता है? एसिड. एसिड है हमारे पास, मतलब इट इज एन एसिड. ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो कार्बोनेट प्लस एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व्ड? एनीवन? ये कार्बोनेट प्लस एसिड अगर रिएक्शन होगा, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व? साथ क्या ऑब्जर्व होगा अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है? Bubbles. ठीक, बबल्स, एफर्वेसेंस. ठीक है. सो रिमेंबर के alkenes they undergo addition reactions. ये Br2 होना चाहिए. ठीक है, Br is group 7 is diatomic. तो alkenes में double bond जो होता है they undergo addition reactions, and addition reactions are where the double bond breaks into a single bond and the carbons make extra bonds with whatever they're getting added to. Bromination याद रखना कि it's a test for unsaturated alkenes. Alkenes को unsaturated कहते हैं. It's a test for identifying alkenes. अच्छा, अगला है compound A can be used as a single monomer to produce 2 different polymers. Polymers तो क्या रिपीट यूनिट ड्रॉ करो. पॉलीमर्स किस तरह बनते थे एल्कीन्स के? कि यू वुड हैव, मतलब ऊपर वाला ही मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे देयर वाज आई थिंक CH2OH and there was COH here.
Acha, so how would polymers form? It was the same addition reaction. Okay, what would happen is that the double bond would break in both cases and they're going to link up. You need to try. Achha, they're going to link up and they would start to connect with each other. ठीक है तो इस तरह के monomers repeat होते जाएंगे ठीक है so that's your polymer. What type of condensation polymer is formed? Alkenes जो होते हैं they always form अच्छा उससे क्या है कि अच्छा ये तो उससे एडिशन का हुआ है ठीक है what type of condensation polymer is formed from compound A? अच्छा the second thing is कि condensation polymer ये मैं explain कर देता हूँ कि polyesters are going to be formed ठीक है थोड़ा सा polymer revise कर लेते हैं कि हमने एक पढ़ा था कि condensation polymers होते हैं कि you have बल्कि let me try and open the ताकि वो polymers हम revise कर लें एक सेकंड इसको हम ठीक है आप लोगों का ठीक है just a quick recap of condensation polymers पता नहीं खुलेगा खुल गया अच्छा we did carboxylic acid end में जाके ना we did somewhere here तो हमने कंडेंसेशन पॉलीमर्स किए थे कंडेंसेशन पॉलीमर्स थे कि उसके अंदर वाटर प्रोड्यूस होता था कि you would have a molecule that had OH on both sides and you had a molecule that had carboxylic acid groups on both sides और वो इसी तरह alternatingly चलते रहते थे one had OH groups on both sides alcohol the other one had carboxylic acid groups on both sides so there was a dicarboxylic acid and there was a diol di का मतलब 2 है और बीच में से वाटर रिमूव होता रहता है OH जाता है H जाता है ठीक है they end up forming water and the serial bond O would connect with the oxygen to form this ester link यहाँ पे भी serial bond O would connect with the oxygen to form this ester link and this keeps on repeating this is called a polyester because you'll get lots and lots of ester links in the molecule तो इसी तरह you can अच्छा चलो छोड़ो so lots of polyester molecules are going to be produced अगर alcohol or carboxylic acid है now if you look at the question over here तो इस molecule में आपको नजर आएगा कि the molecule has if I draw this मतलब इसको हम box कर लेते हैं ठीक है ये हमारा box है इसको हम hide कर लेते हैं तो ये molecule it is एक साइड पे alcohol है और एक साइड पे carboxylic acid है मतलब you can think of this as कि on one side there is alcohol and on the other side there is carboxylic acid right कि मतलब अगर मैं बाकी मॉलिक्यूल को छुपा लूं एक बॉक्स में तो एक साइड पे OH निकला हुआ है दूसरी साइड पे COH निकला हुआ है and then do you get this Saad do you get this Sidra is it Yes. Yes. अच्छा तो इस तरह के अगर मैं रिपीट करूंगा तो एक साइड पे there is serial bond OH acid है and the other side there is OH तो क्या होगा इसका OH और इसका H रिमूव होगा और दोनों आपस में they're going to link up ठीक है ये चीजें जो हैं ये तो बीच में से OH and H are going to get well they'll get removed they'll form water and an ester link would be formed और ये इस तरह फिर रिपीट होता जाएगा इससे आगे चलता रहेगा so what type of condensation polymer would it form it would form a polyester ठीक है it's going to form ester links clear है सारों को साथ clear है Yes, sir.
अच्छा पता नहीं पेपर ही खत्म हो गया। तो ये थोड़ा सा और MCQ पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा अगेन इट्स मई जून सबसे लेटेस्ट है। A mixture of, so the first question, a mixture of ice and water is left and the ice melts. Which one describes what happens as the ice is melting? When the ice is melting, temperature को क्या होगा? Melting में क्या होता है temperature को? Anyone? Increases. नहीं, remember that when something is melting or when something is boiling, the temperature remains exactly constant. But for example, if you let's say cooling curve of water, ठीक है, maybe if I so here's your cooling curve of water. ठीक है, let that open. So like if the temperature is increasing, when it's melting, it's going to become constant. Once it has melted, once the change of state has happened, then the temperature rises. ठीक है, Siddha, do you get the point? Yeah, I get it. So stays the same. What about this? I mean, what about the next part? Is the kinetic energy increasing, or is the energy being used to overcome the attractive forces? What is happening when something is melting? Well, this is your solid, right? The particles are close together, strongly attracted to each other. When something is changing state, then the particles are basically overcoming the attractive forces and they're breaking free from each other. So this is what is happening when change of state happens, then energy is actually, I mean, that's the reason why temperature is not changing, why it stays the same. Because all the energy is being spent to break the attractive forces. ठीक है, ये clear है सारों को? Anna, clear है? Is it? Saad? Yes. अच्छा अगला जल्दी से बता दो, which one is 25 cm cube for measuring 25 cm cube? D. B? D for dog. ठीक है, D. Next one is paper chromatography. Which one has RF value of 0.6? क्या थी RF value? But it was the distance traveled by the dye divided by the distance traveled by the solvent. ठीक है, solvent कितना distance travel कर रहा है? Solvent ऊपर तक जा रहा है ये starting से. Dye कितना distance travel कर रही है? A जो है वो सिर्फ इतना कर रही है. B जो है that's this one. C is this one. And D is this one. Right? तो मुझे बताओ कि which one would give you 0.6? C1. ठीक है, C exactly, क्योंकि 0.6 का मतलब है कि अगर इसने 10 ट्रैवल किया तो 6/10 होता है 0.6. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसने 6 ट्रैवल किया होगा. कहते हैं वो 25 ट्रैवल कर रहा है, दिस इज 15. सो यू कैन एक्चुअली मेजर इट. 15 डिवाइड बाय 25. लेकिन विदाउट कैलकुलेशन आपको एस्टिमेट होना चाहिए. मतलब इसकी RF वैल्यू 0.5 से कम होगी क्योंकि 25 इसने ट्रैवल किया, इसने आधे से भी कम किया. इसकी वैल्यू प्रॉब्ली 20% 0.2 तक होगी क्योंकि अगर इसने 25 ट्रैवल किया तो इसने 5 ट्रैवल किया. 5/25. चलो अगला क्वेश्चन. Diagram shows the electronic structure of a particle with a nucleon number of 40. The nucleon number क्या होता है? That's the number of proton plus the number of neutrons, right? और मसला ये होता है कि neutrons change होते रहते हैं. So the nucleon number is not fixed for any element क्योंकि isotopes होते हैं and the neutrons could be any one, so any number. The table shows
that 3 students, 1, 2, and 3, made to identify the particle. The particle is given over here. So the only thing that you know is कि इसके पास electrons कितने हैं? 1, 2, 8, so that's 10 or 18. So the total 18 electrons हैं. Argon has a proton number of 18, Cl has a proton number of 17, and calcium has a proton number of 20. So which out of these three, what could be the particles? Argon हो सकता है. Yes. ठीक है, क्योंकि 18 electrons हैं. मतलब the proton number is 18, so it has 18 electrons. So one is definitely true. Cl हो सकता है 17 electrons, 17 protons. No. तो वो तो गलत है क्योंकि 18 electrons उसने बनाए हुए. अगर Cl-1 कहता तो वो हो सकता था, तब 18 हो जाते हैं. ये होगा, कैल्शियम हो सकता है ना. Yes, sir. कैल्शियम के पास 20 होते हैं, 2 प्लस है तो उसका मतलब 18 हो गए. ठीक है, तो 1 and 3, दैट्स गोइंग टू बी योर आंसर. ठीक है, इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि रिमेंबर कि न्यूक्लियर नंबर किसी भी एलिमेंट का कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बिकॉज ये जो प्रोटॉन फिक्स्ड होते हैं, मैंने कहा कि हर एलिमेंट का प्रोटॉन फिक्स होता है. मतलब दुनिया जहां में जितने भी कार्बन होंगे ना, सारों के प्रोटॉन 6 होंगे. जितने भी क्लोरीन होंगे, सारों के प्रोटॉन 17 होंगे. ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना, दे नॉट फिक्स्ड, दे कुड बी एनी नंबर. तो इसलिए 40 किसी भी एलिमेंट का हो सकता है. वी तो उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही. अच्छा खैर, इनका फॉर्मूला बताओ. पहले तो बताओ कि ये आयनिक बनाएगा या कोवलेंट बनाएगा. ये किस ग्रुप पे? पी. कौन सा ग्रुप है? 7. एंड क्यू इज इन ग्रुप. 1. ठीक है, it had 1 valence electrons and this had 7 valence electrons. So how many electrons, what would it be, ionic or covalent? Ionic. Ionic. ठीक है, metal और non metal है. और फॉर्मूला क्या होगा? A होगा क्योंकि it's going to lose 1 electron and this one is going to gain 1 electron. ठीक है, which structure of a metal explains why the metals are metal का structure क्या होता है कि metal के अंदर all metals they like to lose electrons, they start losing electrons, and when they start to lose electrons and then the electrons are roaming around in the middle. So why are they malleable? Because when you apply a force, the ions can sort of rearrange, they can slip and slide. So what statement about the structure of metal explains why metals are malleable? बल्कि वो ये B लिखा हुआ है कि the layers of metal ions can slide over each other. They can, if you apply, और इतने आराम से नहीं, you have to apply a lot of force. तो लेकिन वो bend हो जाएंगे, they can be reshaped. अच्छा, bonding structure melting of sodium chloride and sulfur dichloride are shown. सब कुछ बताया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड आयनिक है, आयनिक के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और जाइंट लैटिस होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस ऑल अट्रैक्टेड टू ईच अदर. कोवलेंट के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स उनकी आपस में बिटवीन देम दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो व्हाई डज सल्फर डाइक्लोराइड हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम क्लोराइड? व्हाट्स द रीजन? Study all the reasons, tell me what the answer is. Okay. Are the covalent bonds weaker compared to sodium chloride? No. ठीक है, मतलब the reason is कि sulfur chloride is a simple molecular structure, मतलब it's neutral covalent molecules. उनके bonds बड़े strong होते हैं, but the fact is that one molecule doesn't attract the other molecule. और ionic में क्या होता है? ionic के अंदर everyone attracts everyone else. ठीक है, मतलब it's a giant structure. Na+1 attracting Cl-1, Cl-1 attracting Na+1. It just keeps on happening. Cl-1 attracting, so they just keep on attracting each other. So इसलिए उसका melting point ज़्यादा होता है क्योंकि it's one giant crystal where every ion is attracted to every other ion.
और इसके अंदर मसला ये है कि every molecule is not attracted to every other molecule. They're just not attracted to each other. तो कौन सा आंसर है? C. D. एक सेकंड, the covalent bonds नहीं, ये याद रखो covalent bond covalent bonds बहुत strong होते हैं. सल्फर और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं दे वेरी स्ट्रांग. उसका मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, एना, इज दिस क्लियर? Yes. तो the covalent bonds are not weaker. Covalent bonds are as strong as ionic bonds. ठीक है, a lot of times they're actually stronger. जैसा वो डायमंड के अंदर तो वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. So covalent bond का मसला नहीं है. मसला ये है कि one molecule and the other molecule they're just not attracting each other. सल्फर क्लोरीन को बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है और बड़े स्ट्रांगली बॉन्डेड है. बस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे. वन मॉलिक्यूल डजंट अट्रैक्ट द अदर वन. सो द सी क्या था, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन. नहीं, सोडियम क्लोराइड तो मॉलिक्यूल बना ही नहीं रहा, वो तो जायंट आयनिक लैटिस है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स कोवलेंट होते हैं. So Siddha, it's not C, it's D. Okay? The attractive forces between molecules in sulfur dichloride are weaker than the ionic bonds in sodium chloride. Siddha, is this clear? Yes. ठीक है, रिमेंबर कि मॉलिक्यूल का जो वर्ड है ना, दैट्स ओनली फॉर दीज कोवलेंट सिंपल मॉलिक्यूल्स. मेटल्स जायंट मेटालिक लैटिस होते हैं, यू डोंट कॉल देम मॉलिक्यूल्स. आयोनिक कंपाउंड्स दे आर आल्सो लैटिसेस. मतलब लैटिसेस का क्या मतलब है कि इट्स अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. चलिए ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास देन. ठीक है, ओके देन, टेक केयर. Yeah. अल्लाह हाफिज. Office.